ओके, फाइनली सेट हो गया मेरा कैमरा। यार मेरे पीछे वो स्टिकी थिंगी वाला है बट वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। सीधा फ़ोन है तो एडजस्ट होता है बिकॉज वेट बैलेंस हो जाता है, बट टेढ़ा करो तो इट्स नॉट बैलेंस। ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई डैड। द थिंग जस्ट हैपेंड इज़ हैपेंड। बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था लाइक 2024 में। और फिर एक महीने के बाद मेरे दादा की डेथ हो गई तो माई फैमिली वॉज कम्प्लीटली ब्रोक डाउन। मैं इधर आ गई। सो हमारे फैमिली में 7 मेंबर्स में से सिर्फ 4 ही बचे। एंड प्लस माई मम वॉज सुपर डुपर अटैच्ड टू माई डैड. I was super duper attached to my dad, and we three were like best friends. We used to talk on a tea time like every day. Even when we are going to sleep, we used to talk for hours. We don't even check the time, what time is in the night time, and we just talk like too much, I would say. We used to share about everything, and kind of I feel like because of that I have expectation from everyone that everybody treats me that same way and everybody listens to me, and they have I would say raised the standards bar so high now. अभी कोई मैच नहीं कर पाया है, मेरी बकबक इतना कोई सुन नहीं पा रहा है, but I would say yeah, this is how I feel right now, and life is still getting better. मुझे मेरे पापा ने ना मेरे पापा ने इधर आने के लिए पासपोर्ट भी निकाला हुआ था, एंड ही वॉज कम्प्लीटली रेडी टू कम हेयर, एंड वी वर जस्ट वेटिंग फॉर वीज़ा। हमारा ऑलमोस्ट होने वाला था और फिर रुक गया, और फिर अभी तो कोई दूर दूर तक आसार नहीं दिख रहे कि वीज़ा होने वाला है, बट हु केयर्स नाउ। इफ़ कंट्री डजंट वांट अस, वी हैव आवर ओन कंट्री टू गो। या इन लोगों ने हमारे से बहुत सारा पैसा लूटा है, अंग्रेज़ों ने, और फिर पता नहीं क्यों हम लोग उसी की कंट्री में आ गए यार। बहुत बुरा भी लगता है कभी कभी, बट या इस कंट्री में से पैसे भी बहुत सारे मिले। हमने भर भर के इंडिया पैसे भेजे हैं। जो भी बोलता है ना कि हम लोग इंडिया से प्यार नहीं करते, हम लोग इंडिया से प्यार करते हैं, और हमारे पैसे इतने ज़्यादा इधर से ट्रांसफ़र होता है ना इंडिया में, लाइक पाउंड्स में से रुपीज़ में चले जाते हैं। यू वोंट इवन बिलीव हम लोग जितना कमाते हैं ना, आई वुड से उसका 60-70% आराम से उधर भेज देते हैं, और बाकी के पैसों में से हमारा आराम से गुजारा हो जाता है, मौज मस्ती हो जाती है, कार का, घर का, खाने का, सब चीज़ों का, कार का इंश्योरेंस का, रोड टैक्स, वो सब निकल जाता है, रेंट निकल जाता है, हमारा ट्रैवलिंग का खर्चा निकल जाता है। लाइक रुशित इज़ गोइंग विथ कार एंड आई एम गोइंग विथ लाइक आई एम वर्किंग इन सेंट्रल लंडन, सो आई वुड से 200 pound पहले होता था, but like 150 now because Rushit comes and pick me up from the bus station. So yeah, it's like 150 pound, 15,000 महीने का ट्रैवलिंग का वो सिर्फ वो होता है। सो ये सब निकल जाता है। कितना कमाते हैं ये हम नहीं बता सकते, इट्स नॉट राइट थिंग टू से, बट उसे 60-70% हम लोग इंडिया भेज देते हैं, और अगर अभी भेजना बंद करा है सो हमने यहाँ पे भी थोड़ी बहुत सेविंग कर ली है। थोड़ी बहुत तो नहीं पर काफ़ी, लाइक इंडिया में विदाउट जॉब 2-3 साल आराम से कट सके, शायद ज़्यादा भी अगर विलेज में रहे तो उतना तो सेविंग है। सो आई वॉज थिंकिंग कि रुशित को अगर जॉब मिलती है इधर और डिपेंडेंस अलाउड नहीं है वो वाली, so I was thinking about that lady like Priyanka the artist. She's working in a she's studying in a arts college. What I always wanted to do, wait, let me show you my sketchbook. oh बहुत सारी चीज़ें गिर गई। सी
यू सीरियस, मुझे पेंटिंग आती है. अगर आप मेरा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे ना, लाइक माई इंस्टाग्राम नेम इज़ रिद्धि देसाई ऑफिशियल, और वहाँ पे मेरी सारी चीज़ें लाइक जो मैंने पेंट करी है उधर मैंने डाली हुई है. काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने निकाल भी दी है, बट इट्स लाइक अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने डाली हुई इंस्टाग्राम पे. लाइक स्क्रॉल करोगे तो नीचे नीचे आएगा. सो आई एम थिंकिंग कि मुझे मेरा आर्ट्स परस्यू करना चाहिए. दिस is not what I want to do. Microbiology. I'm not interested in microbiology. It's like my grandparents, my dada was doctor और मेरे दादी डॉक्टर थे. मेरे दादा से बड़े थे, बट उसने मेरे दादा को डॉक्टरी सिखाई थी. सो द थिंग इज़ कि मेरे पापा ने फिर बिज़नेस करा और मेरे भाई ने भी बिज़नेस करा. सो दे वांटेड कि मैं जाऊँ मेरे दादा के कदमों निशान पे, कि I should follow my grandparents, you know, like the thing and their dream that I'm gonna become a doctor. और मैं डॉक्टर वाली मुझे ना 10th तक I was very good in school, but then why am I talking this much? Okay, so 10th तक I was very good in school, but then you know like 11th 12th I wanted to go in co-education because I was in a girls' school and my parents denied me to go there, so I just stopped attending some lectures. I started bunking with my friends and I completely got distracted from school, and then I started studying less and my percentage went so down to the point that I ended up coming in Bachelor of Science instead of MBBS because मेरे इतने ज़्यादा परसेंटेज ही नहीं आए कि मैं MBBS में एडमिशन ले सकूँ, इवन विथ डोनेशंस में भी एटलीस्ट 60-70 तो चाहिए होते हैं ना. मेरा तो 50 लाइक 52-53 समथिंग आया था, और वो भी यू नो लाइक मुश्किल से पास हो गई, यू नो लाइक barely passed. And then I ended up coming in Bachelor of Science and I was still in girls college for 3 years, and then I went in master degree where I went in co-education, and then I felt कि मेरी कोई लड़कियाँ फ्रेंड्स ही नहीं बन रही है. लाइक क्लास में से सिर्फ 5-6 लड़के थे, उसमें से 3 तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, एक without group and 2 with group. Like we have a tigri kind of friends, and then I met my boyfriend there, and then we got married. So and then we ended up coming here. So it's been like 6-7 years. 6 years? No, not 6 years. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 6 years. ये 6th year चल रहा है with my boyfriend. और हमारी अभी भी लाइक ऐसा शादी नहीं हुई है. We just got married on papers. So हमारे रिचुअल वाली शादी नहीं हुई है, और मुझे अभी करने का मन ही नहीं कर रहा है बिकॉज कन्यादान देने के लिए मम्मी पापा दोनों होने चाहिए, और अभी पापा है नहीं. सो आई डोंट वांट टू गेट मैरिड एट ऑल. हु केयर्स? सभी की शादी होनी ज़रूरी नहीं है. कभी कभी लोग बिना शादी के भी खुश रह लेते हैं. इवन इट्स बेटर कि हमारे पास लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोई बच्चा करो, no one's gonna tell us make a babies and you know to get settled down, to buy a house, to get settled somewhere like in a you know in a good post of a job. We just gonna be bachelors I think for a whole life. वैसे लोग they don't think that we are not married, but we think that we are not married yet. I don't have a ring. How can I be married? I don't have this. How can I be married? I don't have this. How can I be married? In mentally, I'm not married. I know I'm 26-year-old right now, but I don't think that I'm married. And that's what is right for me. मेरे आजू बाजू में like my friends are getting married. All my cousins are getting married. I feel sometimes that I'm very behind in my life, because they are already settled, they are doing what they have studied, like they are pursuing their careers, what they have studied, and here I am. I haven't even worked in microbiology job since I've got graduated, like post-graduated, whatever I would say, like whenever I got masters. Since then I have never worked in microbiology field at all. Like I've got passed in like 2021,
and now it is 2025, so it's almost 4 years. I haven't worked in microbiology. I've never worked in microbiology. I gave one interview, by the way, like it's in walking distance, but salary is very less, like 23 lakh ka package hai, if you count in Indian rupees, and here it's like 22 something thousand pound, but which is not enough for criteria of visa. So maybe I won't take that job, or maybe if I take it, I'm not gonna stay there forever, but at least I'm gonna get some experience. And it's like histology kind of lab, it's not microbiology, but they were interested when I went for interview, and they were talking like that they're gonna take me, but I haven't received any mail yet, so let's see what happens. If I'm gonna work there, it's just to escape from the world right now I'm living in and the kind of job I'm doing. The job is not so great what I'm doing right now, but I wouldn't say that it's very bad, because this job is paying all my bills. This job is paying all my tantrums, whatever I want to buy, whatever I want to eat, wherever I want to go, wherever I want to plan my birthday trip. So I wouldn't say that this job is very bad, but it's just because this is paying my bills, because otherwise I'm working as barista right now. I just like to make designs in coffee. Other than that, I don't like anything about my job. Sometimes I make connection with people, like my regular customers, and when I talk to them I feel nice, but it's just like, I would say, half an hour of the day when I like my job. Other than that, like other 7 or 8 hours where I work, I don't like it. Soon I'm gonna get a good news about my job, and then I'm gonna get that. I think I'm talking too much. I'm gonna end this video now, and I'm gonna shoot third video in my trip tomorrow, hopefully when I'm alone, so I can speak how I want, like this. I'm just gonna talk in front of you, nobody else, so you have to listen to me like my parents used to do. So be my friends, okay? I don't have any other friends left now, and no one is there to listen to me now, so you have to listen to me. It's only my mom, but nowadays she don't understand my struggle, and she's alone right now. She don't have my father today, so I don't want to make her tense, and she's not gonna understand anything because I'm making these videos in English. And even though my English is not that good like others, I've studied in Gujarati medium, so my English is not so great, but I'm making this kind of video just to escape from those people, the jar log, those who talks behind your back. It's just to escape from them. So how is my English? Who cares? It's just that you guys understand what I'm speaking. That's all what matters. See you in my next video tomorrow. Bye bye. Love you all.